Good morning, children. Today we are going to start the chapter number 18, Water from Different Places. In this chapter, we are going to discuss how do we get water from different areas and the importance of water in our life. Cripple was reading her book when she heard someone at the door. She was reading the book, and when she heard someone at the door, she saw that there was a guest. Understood? Father welcomed the guest. Here, father is welcoming the guest. He told Ruchan to bring cold drink. So, he told to offer cold drink to the guest. So, he told Ruchan to bring cold drink for him. The guest said, I will not take cold drinks. I want a glass of water. So, the guest said that I don't want cold drink. मुझे cold drink नहीं चाहिए, मुझे पानी दे दो. Understood? I want a glass of water. Father said, these days we are not getting water that is fit for drinking. So, father is saying that these days we are not getting water that is fit for drinking, means that is not good for our health. So, it does not even look clean. So, it is not clean. It's a dirty water. So, it would be better if you do not drink this water. So, it's better if you don't drink. अच्छा है कि आप ये पानी नहीं पियो. We do not have a choice, so we drink it. हमारे पास कोई choice नहीं, इसलिए हम वो पानी पीते हैं. जो गंदा पानी आता है वो भी हमें पीना पड़ता है. तो So, how does contaminated or dirty water harm our body? गंदा पानी हमें कैसे अपने बॉडी को हार्म करता है, नुकसान करता है. So, how if we consume dirty water, we will fall sick. Okay, diseases like cholera, typhoid, etc. is going to spread because of contaminated water. How you know anyone who has fallen sick because of such water? Talk about this. This you discuss about it if you know anyone with your parents, okay, or your elder sister or elder brother. You can discuss it. When the guest came to Cripple's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Cripple's family must be doing for their own drinking water? So, what they are doing? They must be boiling the water and then they are consuming it. Boil करके फिर वो लोग पीते होंगे. The guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? Guest ने बोला कि हम cold drinks में नहीं पीता हूँ. क्यों बोला उसने ऐसा? Because cold drinks are also harmful for our body. वो stomach को, intestine को, सबको नुकसान करता है. इसलिए cold drinks भी हमें पीना नहीं चाहिए. Water games. There was a big water park in North Gujarat. So water parks में आप सब तो जाते ही होंगे, स्विमिंग पूल में, ये सब में, है ना. तो one day Sachin and Neeru went to the water park with their parents. एक दिन सचिन और नीरू जो है वाटर पार्क अपने पेरेंट्स के साथ गए. There were many water fountains. वाटर फाउंटेन्स यू नो ना, पानी जो है पूरा ऊपर से नीचे तक फाउंटेन्स की तरह, मतलब पानी गिरता रहता है. There were many water fountains. Neeru said, look Sachin, there are so many rides in the water, and there were many rides also, slides and all. Look at all these big ponds, Sachin said. Splash, splash, splash. Both turned around. They saw a long, thick water hose going zoom, zoom, zoom. Understood? So they enter into small ponds, means small swimming pools they have built in the water parks, and children used to play in that water. And they saw a long water hose going zoom, zoom, zoom in slides type, and after that you reach in the pond. Sachin went up so high on the slide. See the slides, see here. Okay.
So how the children are playing here. Within a second he had landed the water. Who's understood? This way they landed in the water. Neeru gave a shriek of surprise. Just then they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. Okay, so there were loud noises they heard outside the park. Everyone ran away towards the main gate. So as soon as they heard the noise, all ran out of the park to see what had happened. There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. So see, they are carrying empty buckets and pots, and they are discussing with some other people there. A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Okay, this small child. Okay, Sachin's mother went to one of the women in the crowd. So Sachin's mother went and asked that what happened, what is the matter, she asked. The woman replied angrily, you are asking what is the matter. Our wells have no water. So they are not getting enough water and they are very angry because here so much of water is wasted in this water park. We get our water only from when the tanker comes once a week. Even today that has not come. So they are telling that today the tanker didn't came and they don't have water now. What to do? And here there is so much of water everywhere just for you to play and enjoy. And here there is so much of water in the water park and just for fun and entertainment. And you all are wasting the water just for you to play and enjoy. Tell me, what should we do? So they are asking, what should we do? You only tell me. Okay, this read and write is given in your workbook. In that you will write. Okay. The water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. So this is the reality. So the administration should look after it, and in the village also they have to think about the water supply. And in water parks also, water park में भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हफ्ते में एक बार या पानी वेस्ट ना हो इसलिए हफ्ते में एक बार 2 बार खुलना चाहिए. If you go to a water park, find out from where the water comes to the park. Children, you know from where the water comes in the water parks? Yes, they have bore wells. From there they will get the water, and there must be some facility of tankers also. Like that they got water. Okay. Can we drink this? The lift stopped at the 20th floor. Smith loves going in the lift. So the lift stops where? In the 20th floor. And Smith जो है उसे लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है. Today is a holiday in school. So Smith is saying that today they have a holiday. So Smith had gone with his mother to Anju Madam's house. Okay. So they both went to Anju Madam's house where his mother is working. His mother worked there. The house was quite clean and shiny. The house was looking very shiny and clean. Anju was reading newspaper. So Anju Madam is reading the newspaper. You can see here. She smiled at Smith and asked, "It's a holiday today?" So she smiled and asked Smith that, "Aaj आपका holiday है क्या?" She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of cartoons. So she switched on the TV and what happened?
As soon as he switched on, this Smith was lost in the world of कार्टून्स. आप लोग भी ऐसे ही ना कार्टून जब देखते हो, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, आप लोग को कुछ सुनाई नहीं देता. तो स्मिथ भी ऐसे ही कार्टून देखने के बाद उसी के अंदर वो खो गया. एट दैट टाइम अंजू मैडम शाउटेड. उस समय अंजू मैडम ने चिल्लाया. क्या चिल्लाया? ओ छाया, इट सेज in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes. जो गटर का पानी है वो अपने नलों के पानी में से मिक्स हो गया है पाइपलाइन से. So she is saying, it says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. गंदा पानी पियेंगे तो हमें स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है. इसीलिए प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड येस्टरडे. सो शी इज सेइंग दैट थ्रो द वाटर विच वॉज फिल्ड येस्टरडे, ओके, एंड पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल. और अच्छा पानी लेके उसे बॉयल कर देना for drinking. Also take home some boiled water for your family. And she is saying also what? That you also take some water for your family. Smith was happy to hear this. क्योंकि स्मिथ को तो लाइन में खड़े रहना पड़ता है उनके एरिया में, क्योंकि पानी हर घर में नहीं आता, इसीलिए वो बहुत खुश हो गया. I thought at least today I will not have to stand in a queue for water. It is a real holiday for me. अच्छा है, ये मेरे लिए हॉलीडे, मुझे आज पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा. ओके. Why was Anju worried when she read the newspaper? Why was she worried? Because the dirty water got mixed with the clean water through pipeline. So she was worried. Anju asked that all the water that was filled previous days should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? So they can use for bathing, they can use for cleaning and mopping the surface, and they can use for toilets. Yes. So वो फेंकने की जगह वो सारी चीज़ में पानी यूज़ हो सकता था. In what way did she plan to clean the water? क्लीन करने के लिए उन्होंने क्या बोला था? वाटर को बॉयल करने के लिए, टू बॉयल द वाटर. Do you know of the different ways to clean the water? Describe them. So do you know how the different ways to clean the water? Filtering, okay, ROs most of you have in your homes, plus we boil the water. Okay. Suppose Anju had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? So अगर ऐसा गंदा पानी पी लेते तो क्या होता? वो बीमार हो जाते, डायरिया हो जाता, वॉमिटिंग हो सकता था, स्टमक एक हो सकता था, है ना. Where Smith lives, everyone has to stand in a queue to fill water from common public tap. In Anju's house, water comes all day in the tap. Why is this? क्योंकि अंजू के जो घर में है वो हर घर में टैप है, और उनके पास क्या होता है? टैंक्स होता है ऊपर और नीचे. तो जब भी पानी आता है तो एक बड़े टैंक में वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद उसे फिर मोटर से ऊपर चढ़ा के कभी भी वो पानी को यूज़ कर लेते हैं. तो हर घर में टैप्स होते हैं तो उन्हें हमेशा पानी मिलता है. बट वेयर स्मिथ लिव्स देयर इज़ वन ओनली कॉमन टैप फॉर ऑल द हाउसेस. और वो एक टाइम होता है, उस टैप में से 1 घंटा या 2 घंटा ही पानी आता है. तो उनको क्यू में, सारे लोगों को क्यू में खड़े होके उन्हें पानी भरना पड़ता है. सो दिस इज द डिफरेंस. अंजू रीड द न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर. हैव यू read any news about water in the newspapers? What kind of news? This you can discuss with your parents. Okay. Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? How did you feel?
When we have diarrhea and vomiting, we lose lot of water from our body. जब डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, तो अपने बॉडी से बहुत सारा पानी चला जाता है. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी. वो बहुत ही डेंजरस होता है. हम बीमार ऐसे डायरिया के थ्रू और वॉमिटिंग के थ्रू पानी अपने बॉडी से जाना बहुत डेंजरस होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेकअप फॉर द वाटर. जब भी डायरिया हो तो हमें पानी ज़्यादा पीते रहना है. Water that we lose from our body. We should drink a lot of water when this happens, and we should also mix some salt and sugar in the water. Okay, some salt and sugar we should mix in the water and we should sip slowly. हमें पीना चाहिए वो पानी. लेट्स मेक सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. तो ये सॉल्ट एंड शुगर का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं देखो. Mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in the glass of boiled water and cool it. समझ में है. 1 teaspoon of sugar लेना है, एक ग्लास के लिए है. 1 teaspoon of sugar लेना है और एक छोटा सा इतना सा सॉल्ट लेना है और बॉयल किए हुए पानी में मिक्स करके उसे ठंडा करने के लिए रख देना और फिर उसे धीरे धीरे पीना है जब भी डायरिया हो जाता है तो. अंडरस्टूड. When a person has a diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly. So light food must be taken with it. Light food we have to eat it, and babies should continue to take their mother's milk. So those feeding babies should take their mother's milk. Okay. एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन. मेडिसिन भी हमें डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन भी साथ में लेना है. एंड दे कैन ऑल्सो हैव सम होममेड रेमेडीज़ भी हम कर सकते हैं. इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. और फिर भी डायरिया अगर कंटिन्यूली है तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए. सो नाउ द स्टोरी ऑफ Raj Samadhyala village. Okay, elders vision. This story is about 30 years ago. 30 years पहले की स्टोरी है. In Raj Samadhyala village of Rajkot, the problem of water was raised. पानी का वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था. The सरपंच, जो विलेज का सरपंच होता है ना मेन, the सरपंच of the village was a man with deep insight and vision. वो बहुत ही कोई भी टॉपिक हो उसे बहुत ही अंदर से सोच के और दूर, मतलब वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मतलब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो सब सोच के वो हमेशा जज करते थे. एट दैट टाइम ही कॉन्टैक्टेड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड रिक्वेस्टेड देम टू बिल्ड अ चेक डैम. सो उन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो रहा था उन्होंने बहुत सोचा और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट जो एजेंसीज हैं उनको क्या बोला, उनको चेक डैम्स बनाने के लिए बोला. इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज बिल्ड 45 चेक डैम्स इन 1090 हेक्टेयर एरिया इन द विलेज. और उस विलेज में उन्होंने कितने चेक डैम्स बनाए, 45 चेक डैम्स बनाए. डैम पता है ना क्या, डैम वो होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो भी बारिश का पानी होता है उसे वो कलेक्ट करते हैं. ओके, सो ऐसे उन्होंने चेक डैम्स कितने बनाए थे, 45. नेक्स्ट ईयर देयर वाज हैवी रेन इन दिस एरिया. तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बहुत बारिश हुई. सो ऑल द चेक डैम्स गॉट फिल्ड विथ वाटर. तो सारे के सारे चेक डैम्स जो है वो पानी से भर गए. द लेवल वाटर राइज्ड अप अबाउट 15 मीटर. डीप वाटर लेवल was available to the people. So now there is no scarcity of water there. पानी का वहाँ प्रॉब्लम आया नहीं. क्यों? क्योंकि 45 चेक डैम्स में पानी भर गया. इन 2002, उसके बाद 2002 there was drought. However,
और 2002 में बारिश हुई ही नहीं ज़्यादा। ओके, तो उस समय हाउएवर बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द पीपल ऑफ दिस विलेज, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा तो आगे के लिए बहुत अच्छा है, चेक डैम्स बनाएंगे तो आगे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बारिश का पानी वो कलेक्ट करता जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट हैव एनी ट्रबल, और उस साल बारिश नहीं होने के बावजूद भी किसी को भी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट ईयर्स ऑल्सो पीपल वेर एबल टू टेक क्रॉप्स फॉर ऑल द 3 सीजन्स, पूरे उस साल भी पूरे 3 सीजन्स के लिए उनके पास बहुत पानी था क्रॉप्स उगाने के लिए। सो पीपल वेर वेरी हैप्पी एंड वेरी वेल्दी, उनको वो बहुत खुश भी थे, पानी भी मिल रहा था और उनको पैसे भी मिल रहे थे, क्रॉप्स के थ्रू उन्हें पैसे भी अर्न कर रहे थे। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अंडरस्टूड? सो because of that man, that sarpanch, what happened? They never feel about the scarcity of water. So this is the explanation of this chapter. So notes I am going to send soon. Okay, you just read this chapter once again, okay, and get ready for the notes. Okay.